Standard 6th Maths, Chapter 11, Ratio and Proportion, Practice Set 28. Okay, in each example below, given the ratio of the first number to the second. So here, what they have asked, we have to find out ratio. First number to the second, यानी पहले वाले से second का ratio ढूंढ के निकालो. So let's see, this 24 upon 56 is equals to, now what we have to see, 24 कौन से टेबल में आता है, 56 दोनों कोई कॉमन टेबल में होगा. So like 8 3s are 24 and 8 7s are 56. So this 8 and this 8 get cancelled, 8 1s are 8 1s are. So we are left with 3 upon 7. So ratio for this sums is 3:7. Second sum, 63:49. So we have to write like this, 63 upon 49. Then just find out which table it is divisible. So 63 7 के टेबल में जाता है, 7 9s are, and even 49 is of 7 tables, 7 7s are. Now this and this is common, that get cancelled. So we are left with 9 upon 7. That means answer to this question is 9:7. Now third sums, 52 upon 65. So 13 4s are 52 and 13 5s are 65. So 13 1s are 13 1s are. So 4 upon 5. So answer is 4:5. Fourth sums, 84 upon 60. So 12 7s are and 12 5s are. So 12 and 12 cancel. We are left with 7 upon 5. So answer to this question is 12:5. Every time you have to just find out one common table. Now here 35 upon 65. So 5 7s are 35 and 5 13s are. So 5 1s are cancel, 7 upon 13. So answer is 7:13. Now this is table of 11. 11 11s are 121. 11 9s are 99. So 11 1s are 11 1s are cancel, 11 upon 9. So 11:9. This is the answer. Second sub question, find the ratio of the first quantity to the second. Now in previous question there was only number. Now you will see they must have given some elements or object. Now here 25 beads upon 40 beads. So 25 we have to do in same pattern, जैसे हमने पहले किए थे वैसे ही करना है. So 25 is table of 5. 5 5s are, and here 5 8s are 40. So 5 and 5 cancel, 5 upon 8. So answer is 5 beads ratio 8 beads. Or you can simply write 5:8. या तो ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे. Now second one, 40 rupees 120 rupees. So you must see ये सेम है क्या देखना है, रुपीज़ है. So no need to worry about, कुछ changes नहीं करना है. Now 40 is the table of 40 1s are 40 and 43s are 12. So 40 1s are 40 1s are cancel, 1 upon 3. So your answer is 1:3. 15 minutes 1 hour. See now here we have to do some converting. यहाँ 15 मिनट दिया है and here they have given 1 hour. So 1 घंटे में 60 minutes होता है.
So you just simply have to write 1 hour is equals to 60 minutes. So ये क्वेश्चन बन गया 50/60. So 15 ones are 15 and 15 fours are 60. So 15 cancel 1/4. So our answer to this question is 1/4. Now this 30 liters 24 liters. यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं करना है, लीटर्स है. सो सिंपली 30/24 इक्वल्स टू 30 3 8s are 3 8s are 3 10s are 30 and 3 8s are 24. 3 ones are 3 ones. फिर ये 2 का टेबल है. 2 4s are 2 5s are. So 5/4. So answer is 5/4. Now 99 kg upon 44,000 grams. So now this grams we will convert this gram into kg. ये ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे. So 44,000. Now we know 1 kg is equals to 1000 ग्राम. So ये जो है ग्राम्स उसको 1000 से डिवाइड करेंगे टू मेक इट अ kg. तो 1000 कैंसल 1. सो दैट मीन्स यहाँ पे नीचे 1 बचा मतलब कैंसलेशन होगा. सो ये बन गया 44 kg. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. यहाँ वी हैव 99 kg एंड 44. तो दैट इज 99/44. सो इट इज टेबल ऑफ 11. 11 9s are 11 4s are equals to 11 and 11 cancel 9/4. So answer to this question is 11/4. Now 1 liter 250 milliliter. So here now ये जो 1 लीटर है ये 1 लीटर को कन्वर्ट करेंगे. We know that 1 liter is equals to 1000 मिलीलीटर. तो ये बन गया 1000, ये बन गया 250. तो नाउ क्वेश्चन इज 1000/250. सो इफ यू डू डायरेक्ट कैंसलेशन सो ये बन जाएगा 250 ना. 0 and 0 कैंसल हुआ. 100/25. 100 4s are 25 4s are 100. 25 1s. ये 0 0 कैंसल हो गया. सो यहाँ 100/25 बचा. सो 25 25 4s are 100. 25 1s are 25. सो वो भी कैंसल हो गया. सो यहाँ बचा 4/1. सो आंसर इज 4/1. नाउ 60 पैसे 1 rupees. So we know that 1 rupee is equals to 100 paise. So your question is 60/100 paise. So this 0 0 cancel. 2 3s are 6. 2 5s are 10. ये 6/10 है ना. So 2 और 2 भी cancel. So 3/5. So your final answer is 3/5. Yeah, 250 grams and half kg. So half kg means 500 gram. So your question is 750 gram upon 500 gram. तो ये 0 0 लास्ट के 0 कैंसिल हो जाते. अब ये 75/50 है. So 25 3s are and 25 2s are. So 25 cancel 3/2. So answer to this question is 3/2. 9 sums 125 centimeter 1 meter. So here this 1 meter इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर.
So here now we have 125 upon 100. So 25 5s are 125 and 25 4s are 100. So 25 1s are 1s are 5 by 4. So answer to this question is 5 by 4. Third sum, Rima has 24 notebooks and 18 books. Find the ratio of notebooks to books. So here उन्होंने क्या बोला है, नोटबुक्स टू बुक्स. सो कितने नोटबुक है, 24. वी हैव 24 नोटबुक्स एंड 18 बुक्स. सो रेशो 24 अपॉन 18. सो 24 is 6 4s are 24 and 6 3s are 18. So 6 1s are 6 1s are cancel, 4 upon 3. Okay. So therefore ratio is 4:3. Fourth sum, 30 cricketer players and 20 kho-kho players are training on a field. What is the ratio of cricket players to total number of players? यहाँ क्या पूछ रहे, 30 क्रिकेटर्स है और 20 खो खो प्लेयर्स है, दो अलग अलग प्लेयर्स है. सो उनको रेशो कैसा चाहिए, क्रिकेट खेलने वालों से और टोटल प्लेयर वालों से. सो फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर इज हाउ मच, 30 एंड खो खो प्लेयर is 20. So total players will be, total players कितने हुए, टोटल खेलने वाले खिलाड़ी 30 plus 20 that is 50 players. So now what is the ratio of cricket players to total number of players? So cricket players to total number of players, ये क्रिकेट का है और ये टोटल है. So 30 upon 50. So 3 10s are 5 10s are. So 10 and 10 cancel, 10 1s are 10 1s are. We are left with 3:5. So the ratio of the cricket player to the total number of player is, required answer is 3:5. Snehal has a red ribbon that is 80 centimeter long and a blue ribbon 2.20 meter long. What is the ratio of the length of the red ribbon to that of the blue ribbon? First here ये जो ब्लू रिबन दिया है ना वो मीटर्स में है, तो इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 2.20 मीटर, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो इसको 2.20 को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे. वी गेट, ये जो डेसिमल है वो इससे मल्टीप्लाई होके चला जाएगा. सो इट बिकेम 220 सेंटीमीटर. नाउ दे हैव आस्क्ड रेशो रेड रिबन टू ब्लू, तो रेड पहले आएगा, रेड रिबन टू ब्लू रिबन. So that is 80 centimeter upon 220 centimeter. So yeah, 20, 2 4s are 8, again 20, 2 into 11. So 21s are 21s are. So 4 upon 11. Okay. So the answer to the question is 4:11. Sixth sum, शुभम्स एज टुडे इज 12 years. आज के डेट में शुभम का एज 12 years है एंड हिज फादर्स एज इज 42 और उसके डैडी का 42. मदर्स एज इज यंगर देन हिज फादर्स बाय 6 years. बोल रहे उसके मम्मी उसके डैडी से 6 years छोटी है. फाइंड द फॉलोइंग रेशियो. सो दे हैव आस्क्ड अस 3 different questions. Here first we will start by finding her mother's age. शुभम, his mother's age. शुभम के मम्मी का एज ढूंढते हैं पहले. सो लेट एज ऑफ शुभम्स
मदर इक्वल्स टू, उसके डैडी से 6 ईयर्स छोटी है ना, तो डैडी का एज 42, 42 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 36 ईयर्स. Okay, according to question. Now first question is what? तो ये हो गया mother's age. Now we have everyone's age. हमारे पास सबका एज है, मम्मी का है, डैडी का है एंड शुभम का है. So first question, ratio of Shubham's age today to his mother's age today. तो शुभम्स के एज से मदर का एज जानना है. सो शुभम इज 12, मदर इज 36. सो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 जा. सो यानी 12 1 12, 12 3 जा. 12 1 12 1 कैंसिल हो गया, 1/3. तो यहाँ पे आंसर 1/3. Now second question, what is second question? Ratio of Shubham's mother's age today to his father's age today. So mother's age to father's age. So mummy is 36, father is 42. So again it is table of 6 6 are 36, 6 7 are 42. So 6 और 6 common बचा यहाँ 6/7. तो आंसर इज 6:7. Now third question, when Shubham was 10 years old, जब शुभम 10 साल का था, the ratio of his age to his mother's age then, यानी शुभम 10 साल का, मतलब आज अगर शुभम 12 इयर्स का है तो 10 साल के लिए यानी 2 इयर्स पीछे जाना पड़ेगा. सो यह शुभम्स एज 10 years, that means 2 years ago, 2 साल पहले की बात हो रही. सो मम्मी के एज में से भी 2 साल निकालने होंगे. मदर्स एज 2 years ago विल बी 36 आज के डेट में. टूडेज एज इज 36, तो 2 years बिफोर इट वुड बी 36 minus 2 34. So now we have age of both of शुभम एंड मदर. शुभम का 10 years है, मदर का 34. उनको 2 साल पहले का एज चाहिए. सो 2 5 are 10, 2 17 जा. सो 2 कैंसल, 5/17. So therefore 5:17.